Okay, start. Okay, class, we will start with the small signal stability today. What is basically small signal stability? So, in the today's class, we will discuss about the small signal stability. Look, we have already discussed in the previous classes that there are two type of stability problems. One is steady state stability and the other one is transient stability. So, to determine that either your system is transiently stable or steady state stable, so we have to opt for two different type of solution methodologies. तो अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर एक स्टेडी स्टेट डिस्टर्बेंस आई, एग्रीड, और स्टेडी स्टेट डिस्टर्बेंस में आपका सिस्टम कब जाता है? जब हमारी जो सिस्टम के ऊपर डिस्टर्बेंस है वो स्लो है एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम. हमने ये बात पहले स्टेबिलिटी के लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है. अब अगर हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम के ऊपर डिस्टर्बेंस आई स्लो और क्या थी वो स्मॉल, इसके आने से क्या आपका सिस्टम स्टेबल रहा या अनस्टेबल हो गया? अगर हमें इस बात को चेक करना है, उस चेक करने के लिए जो मेथड ऑफ एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड ऑफ एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी एनालिसिस. अंडरस्टैंड? सो ये जो मेथड ऑफ एनालिसिस है ये आपको कब इस्तेमाल होता है? ये जब इस्तेमाल होता है जब हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके सिस्टम के ऊपर जो डिस्टर्बेंस थी वो स्लो थी और कुछ टाइम के लिए थी. तो फिर अगर हमने देखना है कि हमारा सिस्टम अपना स्टेबिलिटी गेन कर सका या अनस्टेबल हो गया, तो उस एनालिसिस करने के लिए हम जो नेम रखा, हमने उसका नाम रख दिया स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी एनालिसिस. सो स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए भी वी यूज स्विंग इक्वेशन, because this is the only swing equation that basically tell us that how much swing your rotor has produced during any disturbance. आपको याद होगा, जो कि हमने लास्ट स्विंग लेक्चर के जब इक्वेशन के लेक्चर में हमने डिस्कस की ये बात कि रोटर ही है जो डिटरमिन करता है कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर कितनी डिस्टर्बेंस आई है, उसकी जो स्विंग है वो बताती है. ऐसे ही है. तो अब उसी स्विंग को हम देखेंगे, क्या वो स्विंग स्मॉल है या वो स्विंग जो है वो एक बड़ी स्विंग है, क्या वो स्विंग स्लो है या वो जो स्विंग है वो बहुत तेजी से आ रही है, सडन है. सो अब हम स्टार्ट किस इक्वेशन से ही करेंगे? सो आवर मेन इक्वेशन इज स्विंग इक्वेशन. सो अब हम स्विंग इक्वेशन को ही लेके चलेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या है. तो ये जो स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी एनालिसिस है, लुक, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्विंग इक्वेशन which is written over here. Now what I have done here is that I have just replaced omega s with 2 pi f naught. So when I have replaced 2 pi f naught in this equation, we have basically simplified this equation in the form of h over pi f naught d square delta by dt square is equal to pm minus e. Now this form of single equation will be with us for determining the small signal stability of a synchronous machine. So now the equation is in the form of h over pi f naught Pm minus Pe, which is written over here. You know that Pe is equal to, you know really well that Pe is equal to EV over X sine delta naught. Agreed? You know that. And we always say that this part of the equation is known as P max. I mean, what maximum value of this equation we can get? इस इक्वेशन से हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? जब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा. तो साइन एंगल जब भी 1 होगा तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी? दिस वैल्यू वी विल गेट दिस. सो वट एवर विल बी दिस वैल्यू, दिस विल ऑटोमेटिकली विल बिकम व्हाट? पी मैक्स. तो जो भी वैल्यू उस वक्त आपकी ईवी ओवर एक्स की होगी वो क्या बन जाएगी? पी मैक्स बन जाएगी. So that's why we are saying that P is equal to P max sine delta naught. So that's why we are writing it here as P is equal to P max sine delta naught. So we are replacing PE with P max sine delta naught in this equation, and this equation will become h over pi f naught d square delta over dt square is equal to Pm minus PE replaced with P max sine delta naught, and it becomes equation number 1. As we know that this disturbance is small. Why we know that this disturbance is small? How we know that? हमें कैसे पता है कि disturbance small है? Because we are saying that we are doing this analysis for steady state stability, and in steady state stability the disturbance is slow and small. So therefore we can say that this angle, the change in angle delta
this change in angle delta is equal, which is equal to say, delta naught plus delta delta, this disturbance delta delta is very small. The change in angle is small in case of steady state stability. So therefore we are saying that since disturbance is small, and what is the disturbance? Disturbance is basically represented with the help of delta delta. So because delta is the actual angle, and we have at initially we have the value of the angle delta naught, but the disturbance come in the form of delta delta. So what is the disturbance here? The disturbance here is delta delta. So this value of disturbance or the disturbance is small. So therefore we will use this concept of delta delta and linearize our equation around this point. This linearization of this equation, this swing equation around this point, this help us to solve the small signal stability analysis, and this help us to actually have the value of delta at the end of the derivation. So this is the main point in solving the small signal stability problem, that we can solve this problem because we have small disturbance, and that basically linearize our equation. How our equation is linearized? Just check it here. Because we know that the disturbance is small, we replace delta with delta naught plus delta delta. So we have replaced delta with delta naught plus delta delta here. Similarly here, delta with delta naught plus delta delta. Agreed? So on the left hand side we will write it here. हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे? हम इसको देखें, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. This will be multiplied by here, and similarly this will be multiplied with this delta delta. So we have two values here. One is h over pi f naught d square delta naught plus delta divided by dt square plus h over pi f naught d square delta delta over dt square. And on the right hand side we have Pm minus P max, and here we have sine delta naught plus delta delta. So it will just behave like sine A plus B. So we will open the formula for sine A plus B, which will become here sine A cos B cos A sine B, which will become here sine delta naught cos delta naught sine delta delta. So this equation will open just like sine A plus B. So you know that using this concept here, since disturbance is small, delta delta is very small. So delta delta is very small. So whenever the value of delta delta is small, we can use this concept over here. If delta delta is very small, it will approach towards. If delta delta is very small, the change is very small, we will say that अगर change बहुत छोटा है तो it will, I mean कितना छोटा है, ये जीरो से बहुत करीब है. Change बहुत छोटा और किससे करीब है? जीरो से. तो it means ये कि अगर change बहुत small है तो delta will represent just like a zero over here. So cos 0 is equal to 1. Therefore we are saying that cos delta is equal to approximately equal to 1. Why we are saying that it is approximately equal to 1? Because the change is very small. Similarly, for sine delta delta, we are saying that it is approximately equal to delta delta. Why? Because whatever the value of the delta delta, sine follows delta, therefore sine delta is equal to delta delta. Agreed? So therefore we can replace sine delta delta with delta delta here in this equation, and we can replace cos delta delta is equal to 1 in this equation. So this equation is simplified and can be rewritten here in this form: h over d square delta over dt square plus h over pi f naught d square delta delta divided by dt square is equal to Pm minus P max sine delta naught. You can look over here that there is no cos delta delta here. Why? Because cos delta delta is equal to 1 now. Again here P max cos delta naught, we don't have sine delta delta because sine delta delta is equal to delta delta. So this equation has become now equation number 2 here in your derivation. So now putting the value of h over pi f naught d square delta divided by dt square in 2 from 1. Now this is your equation number 2, and where is your equation number 1? This is your equation number 1. So you already know that h over pi f naught is equal to d square delta over dt square. Remember? So h over pi f naught is equal to d square delta over dt square. Here in this equation we have already this term. Here we have this term h over pi f naught d square delta over dt square. So here in the equation 1 we have already h over pi f naught d square delta over dt square is equal to Pm minus P max sine delta. So what we do, we simply replace h over pi f naught in equation 2 with here from equation 1 with Pm minus P max sine delta. So this equation, after replacing
Pm minus Pm sin delta naught in this equation for h over pi f naught d square delta over dt square. What we get is that it will basically I may reduce the right hand side or cancel out the values on the right hand side. For example, it will cancel out Pm, it will cancel out what? It will cancel out Pmax sin delta naught. So it will cancel the some values on the right hand side because it is on the left hand side. So the same values on the right hand side will be cancelled from those. So your simplified equation from equation number 2 is now in the form of h over pi f naught d square delta delta divided by dt square is equal to minus p max, because this pm is cancelled by the pm of this value. So we are left with minus p max cos delta naught, this one, and delta sigma. So or we can write or we can write this equation in this form by moving minus p max cos delta naught delta delta from right hand side to left hand side and written this p max cos delta naught delta delta with a positive sign on the left hand side of the equation. So this has become your equation number 3. So now we have one equation this, one equation this, and one equation this. So we have now until now we have obtained 3 equations, 1, 2 and 3. So what this equation is representing to you? Now just consider this equation here. In this equation, which are the terms that are important for us? We have the equation number 3 here, h over pi f naught d square delta delta divided by dt square plus p max cos delta naught delta delta is equal to 0. So this is the equation. So the students, it is a very interesting point here that I am now explaining to you. Look at this expression, p max cos delta naught. Look at this expression, p max cos delta naught. What it is actually? It is actually the derivative of what? It is actually the derivative of this term, p max sin डेल्टा नॉट. और ये टर्म क्या है? अगर आपको याद हो, लॉजिकली मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी. अब जरा इस बात को दोबारा हम देखते हैं कि पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट एक्चुअली स्टूडेंट्स है क्या? ये वो अमाउंट ऑफ पावर है जो आप अपने जनरेटर से ड्रॉ करते हैं. एग्रीड? ये वही पावर है ना. P इज इक्वल टू ईवी ओवर एक्स साइन डेल्टा. हमने, आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट में बात की थी कि जब आपके जनरेटर के ऊपर लोडिंग होती है तो जनरेटर क्या करता है? जब आपके जनरेटर के ऊपर आपने लोड को इनहेंस किया तो आपका जनरेटर उस वक्त क्या करता है? ज्यादा आउटपुट थ्रो करता है बाहर की तरफ, बिकॉज वी आर नाउ पुशिंग मोर पावर फ्रॉम जनरेटर. ऐसे ही हो गया. हम वी आर पुलिंग मोर पावर फ्रॉम जनरेटर. हम जनरेटर से क्या कर रहे होते हैं? ज्यादा पावर पुल कर रहे होते हैं. तो जनरेटर किस इक्वेशन के थ्रू वो पावर आपको दे रहा होता है? विच इक्वेशन गवर्न दैट आउटपुट पावर? P is equal to EV over X, and that EV over X is now P max sin delta naught. So this equation is basically the power transfer equation, or and the curve that we made from this equation, and that curve is known as power angle curve. क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल होता है? इस एंगल को हम क्या कहते हैं? पावर एंगल कहते हैं. ऐसे ही याद है आपको? So this angle is power angle. So the curve that we made through this angle, that curve is usually known as power angle curve, and we will discuss that curve in more detail when we study about equal area criteria and transient stability analysis. What is power angle curve? However, the power angle curve is generally have a shape just like this. So this is basically a power angle curve. So it has a shape just like this, and it is a maximum value at pi by 2. Which is 90 डिग्री. So क्या है कि आप ये देखें, ये जो टर्म है ये क्या गवर्न करती है? ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या गवर्न करती है कि आपके जनरेटर से आप कितना आउटपुट ड्रा कर रहे हैं. एग्रीड? समझ आ गई बात? यही जो टर्म है इसके अंदर जो एंगल्स हैं, ये टर्म आपकी क्या बनाती है? पावर एंगल कर्व भी यही इक्वेशन बनाती है. समझ आ गई आपको बात? अब मुझे ये बताएं, जब आपके जनरेटर के ऊपर डिस्टर्बेंस आई, डिस्टर्बेंस कैसी थी? डिस्टर्बेंस कैसी थी आपके जनरेटर के अंदर? कोई इंक्रीज इन लोड था? दैट वाज जस्ट सिंपली एन इंक्रीज इन लोड. जब आपके जनरेटर में इंक्रीज इन लोड था तो उससे क्या हुआ? आपके जनरेटर की जो आउटपुट पावर है वो इनहांस हुई. इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जो हुआ उससे क्या हो गया? ज्यादा हो गया. और पहले अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट की जो वैल्यू थी वो फॉर एग्जांपल यहां पे थी, लेट्स अज्यूम दैट पहले जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट थी आपकी कितनी थी? 10 मेगावाट थी. ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट मेगावाट्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट किलोवाट्स. पहले अगर आपके जनरेटर की इलेक्ट्रिकल आउटपुट कितनी थी? 10 किलोवाट थी.
पावर आउटपुट अगर आपने उसके ऊपर लोड बढ़ाया तो अब उसकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट कितनी हो गई है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट कितनी हो गई है स्टूडेंट्स, 11 किलोवाट। जस्ट अज्यूम दैट हमने उसके ऊपर लोड बढ़ा दिया, उसकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट कितनी हो गई है, 11 किलोवाट। सो नाउ दैट जनरेटर इज गिविंग यू हाउ मच पावर, 11 किलोवाट। दैट जनरेटर इज गिविंग हाउ मच पावर, 11 kilowatt. So from which equation you calculate that we are getting 11 kilowatt? We will obtain this value from this equation, and this will be the current output power of your generator. Agreed? So what is the change in power? What is change in power? Before the loading we have a power of 10 kilowatt. After loading we have a power of 11 kilowatt. What is the change in power? 1 kilo. Very good, 1 kilowatt. So which equation or which character or which operator in mathematics, I mean, describe that change? Differential, derivative. So change कौन बताता है? अगर आपकी पावर कोई भी चेंज अगर आपने बताना है मैथमेटिक्स में तो कौन सा ऑपरेटर आपको बताता है? डिफरेंशियल, डेरिवेटिव, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पावर, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पावर। एग्रीड? समझ आ रही है आपको बात? सो अब चेंज कैसे, इस चेंज किसके अंदर आया, इस पावर के में आया ना। इस पावर के चेंज को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव। वेरी गुड। सो इस पावर के चेंज के, ये पावर है, ये पावर तो भी है, लेकिन इसके अंदर चेंज कितना आया, इस चेंज को बताने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव। अगर आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो व्हाट इट विल बिकम, एक्चुअली इट विल बिकम इक्वल टू पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट। ये एक्चुअल पावर है, इसमें चेंज कितना आया है इस वक्त, वो कौन बताएगा आपको, इसका डेरिवेटिव। हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट की बजाय अब क्या हो गया है, P max cos delta naught. So that's why we are saying that this P max cos delta naught is slope of power angle curve. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, क्योंकि स्लोप आपको क्या बताती है, रेट ऑफ चेंज। एंड व्हाट डज योर स्लोप एक्चुअली टेल्स यू, रेट ऑफ चेंज, कि कितनी तेजी से आपका चेंज आया। तो ये आपको जो चेंज बताएगा कि 10 किलोवाट से 11 किलोवाट जो चेंज आ रहा है 1 किलोवाट का, वो आपको कौन बताता है, वो ये डेरिवेटिव बताता है। That's why we are saying that this P max cos delta naught is slope of power angle curve known as synchronizing. अच्छा, अब आपको पता चल गया, अब आपको चेंज पता चल गया कि आपका पहले जो सिंक्रोनाइजेशन हुई थी किसके ऊपर हुई थी, 10 किलोवाट पे। यू हैव इंक्रीज द लोड, देयर इज अ स्लो चेंज, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो कहां पे चला गया, पावर आउटपुट 11 किलोवाट में, चेंज कितना आया, 1 किलोवाट पे। समझ आ गया आपको पता, ये क्या हो गया, ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। एग्रीड? समझ आ गई आपको बात, ये क्या बन गया, ये सारा कुछ ऐसे ही, वो पूरा ये पूरी टर्म बन गई, ये बन गई। अच्छा, ये जो चेंज आया है, आपका चेंज कितना आया, 1 किलोवाट का। अगर आपने अपने सिस्टम को दोबारा स्टेबल करना है या रीगेन करनी है उसकी स्टेबिलिटी, या उसको स्मॉल सिग्नल स्टेबल रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चेंज को कोप करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके जनरेटर के ऊपर 1 किलोवाट लोड बढ़ा है तो आपके जनरेटर को वो 1 किलोवाट देना है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? अगर आपके जनरेटर के ऊपर कितना लोड इंक्रीज हुआ, 1 किलोवाट, पहले कितना था 10 किलोवाट, आपने उसके ऊपर लोडिंग की, 1 किलोवाट की और लोडिंग की, जनरेटर के ऊपर 1 किलोवाट की और लोडिंग हो गई। अब अगर आपने जनरेटर के ऊपर 1 किलोवाट की और लोडिंग की है तो आपके जनरेटर को अब 1 किलोवाट देना है। एग्रीड? अगर आपके जनरेटर 1 किलोवाट नहीं देता ड्यू टू एनी रीजन, रीजन क्या हो सकती है, उसकी कैपेसिटी नहीं है जनरेटर की, आपके पास इनपुट ही नहीं है, कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो 1 किलोवाट नहीं देता। अगर वो अगर वो 1 किलोवाट दे देता है आपका जनरेटर, दोबारा लोड बढ़ा, जनरेटर ने 1 किलोवाट दे दिया, तो क्या हो गया, आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता रहा, आपका हर चीज सिंक्रोनाइज रही और देयर इज नो डिस्टर्बेंस। एग्रीड? मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपका जनरेटर 1 किलोवाट नहीं दे सका, उसमें कैपेसिटी नहीं थी, उसके पास इनपुट ही नहीं था उतना, उसके पास वॉल्व भी नहीं थे उतने, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जनाब, फिर उसके बाद होगा ये कि आपका जब 1 किलोवाट आपके पास नहीं आया तो फिर क्या होगा, आपका जनरेटर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, बंद होने की तरफ जाना चाहिए। आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो आप एक घर में जनरेटर ले आए, घर में जब आपका जनरेटर आया है कि उसके आने से क्या हुआ, फिर कि जब आपने उसके ऊपर लोडिंग की, और लोडिंग करने से क्या हुआ, उस जनरेटर के ऊपर जब आपने ज्यादा लोडिंग की, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोडिंग हो गई, तो जनरेटर चलने की बजाय, सिंक्रोनाइज रहने की बजाय क्या हुआ, वो अपनी सिंक्रोनाइजेशन खो दी और उसने क्या हुआ, बंद होने की तरफ जाना शुरू हो गया। आपको याद है वो एग्जांपल? तो वो, अच्छा, अब आपको इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज है, ये जो चेंज आपको बता रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट। इसके अंदर जो पीएस है उसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो पी मैक्स कॉस, इसको हम क्या कह रहे हैं, पी मैक्स। सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं,
हम इसको सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो वैल्यू है, ये वो कोफिशिएंट है जो कि आपको बताएगा कि अगर आप ये पावर अगर जनरेटर आपका दोबारा देगा सिस्टम के अंदर, तो आपका जो सिस्टम है वो किसके अंदर रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर रहेगा। स्टूडेंट्स आपको समझ आई ये बात? तो ये जो दो बातें हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब जब आपने इसको, आपने क्या करना है, पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट को रिप्लेस कर देना है किससे, पी एस से। सो देयरफॉर आपने पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट को रिप्लेस कर दिया पी एस से, और आपकी जो इक्वेशन 3 है उसको अब हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एच ओवर पाई एफ नॉट डी स्क्वायर डेल्टा डेल्टा डी टी स्क्वायर प्लस पी एस डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 0। नाउ दिस हैज बिकम योर इक्वेशन नंबर 4। फाइन। सो नाउ अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और फिर हम आगे से इक्वेशन नंबर 4 से हम आगे मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं हमारी स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी एनालिसिस को फाइनलाइज करने के लिए। Okay, students, at the equation number 4, if you look at carefully at equation number 4, it actually relates with the second order differential equation. I mean, the form it appears in front of us. Basically, if we correspond it or relate it with the second order standard differential equation, we will find out that the various components of this equation can be correspond to standard order differential equation. For example, the equation number 4 I will write it over here again. If you look at it here, the equation number 4 that we have right now is actually here h over pi f naught d square delta over dt square plus ps delta delta to 0. So if we relate or compare this equation with the standard second order differential equation, we will find that h over pi f naught is equal to a. Now b is equal to 0 because there is no b here in this equation, and c is equal to ps. So now we have a equation which is a second order differential equation, so we can make roots of this equation. So these roots basically explain us that either our system is stable, unstable or partially stable. So we have used the characteristic equation and using the formula minus b plus minus b square minus 4ac over 2a, putting the values of a, b and c in this formula and simplifying it, we obtain this s is equal to minus times h over pi f naught ps over 2 into h over pi f naught. So this 2 will cancel the 2. So and h over pi f naught here is h over pi f naught with root. So we have then h over pi f naught in the denominator with the root sign, and the h over pi f naught in the numerator will be cancelled out. So in the numerator we will left with ps under root, and in the denominator we are left with h over pi f naught. So now if we further simplify this and make it under one root, so pi f naught will go in the numerator side and it will become pi f naught divided by h times ps. So this here it is further simplified. So now if we take the square on both sides of this equation, it will become s square is equal to minus pi f naught ps over h, which is a simplified form of this equation when we write it in the characteristic form and apply it with the formula. So now we obtain the roots. Now here very interesting point. Here is a very interesting point is that if we put here ps, the value of power coefficient ps, which is known as the power coefficient, if we place the value of power coefficient here with the negative sign, which means that your power coefficient is negative. So if the power coefficient is negative, then what we can see over here is that the negative sign of power coefficient basically indicates us that our system roots will be on the right half plane. And what does this mean is that if our roots are on the right half of the plane, of the S plane, then it means that our system is unstable. So this clearly indicates that the value of PS matters a lot. If the value of power coefficient is negative,
this means that our system is unstable. So similarly, if the value of power coefficient is positive, then our system is marginally stable. How our system is marginally stable? Because in this case, the roots will be on positive and negative axis, or we can say that on the j omega axis. And because of this, our system is marginally stable. So from this point, we have concluded that omega n is equal to pi f naught Ts divided by h. So how we are saying that omega n is equal to pi f naught divided by h times Ps? This is concluded from here is that we know that the standard form of S12 is equal to alpha plus j omega. So from here, if we look at here, the S is equal to, from previous equation which is this one, S is equal to pi f naught Ps over h. So if we write this equation here, from here, if we write this equation can be written here in this term. I am writing it here over here again. So this can be write in terms of this. I will write it here. This again. So from the previous equation, we know that S is equal to minus underscore pi f naught over h times Ps. So if we have a positive value of Ps, for positive Ps, the root become imaginary. And S becomes S is equal to 0 plus j under root pi f naught over h times Ps. So if we compare this equation, S is equal to 0 plus j under root pi f naught h Ps, when S is equal to alpha plus j omega, you can easily say that alpha is equal to 0 and omega n is equal to pi f naught over h times Ps, which is the natural frequency or the natural frequency of oscillation of a rotor of a synchronous machine. So these equations indicate you that your system is either in stable state, unstable state, or they are partially stable. And therefore they are also indicating you the damping of a machine, that is either your machine is underdamped, overdamped, or undamped. So these equations play a vital role in determining that your system is either a small signal stability or not. For example, if we have a negative value of Ps, this clearly indicates that the roots of the equation or the system is on the right hand plane. Therefore, the system is undamped, or sorry, the system is not damped, and your system is unstable. Which means that the negative value of Ps, in the case of negative value of Ps, the system is unstable and your system is not small signal stable. Similarly, for the case of positive value of Ps, as the roots are on the j omega x axis, so your system is marginally stable, and if we add any damping or any other source in the rotor of a machine or in the generator, or if a machine has a high value of inertia, so there is a high possibility that system can regain its stability again. So thank you very much class. Today we have discussed about the small signal stability of a machine in case of small disturbance, and we have discussed this equation without considering the damping effect of a
of a machine. In the next class, we will discuss about the damping aspect of a machine and how then small signal stability reacts. Thank you very much.